What do you mean by assessment of personality? What do you mean by assessment personality? Briefly discuss. Briefly discuss any three psychometric tests of accessing personality. Long question है 3 देजी हम सब डाकी दो. देखो personality consists of introduction लिखियो. Personality consists of the unique and stable patterns of behavior, thoughts, and emotion and emotions shown by individuals. Next point. It is a field of psychology. It is a field of psychology that seeks to that seeks SEEK seeks to understand and measure individual personality differences that characterize people, individual personality differences that characterize people across the time and circumstances. It is the measurement of personal characteristics
It is an end result of, it is an end result of gathering information intended to advance psychological theory and research and to increase the probability that wise decision will be made. Wise decision will be made in applied setting. Hey, ଆଉ ଗୋଟେ part ରହିଯାଇଛି। Personality testing, next ଆଉ ଗୋଟେ para ଦେଖିପାରିବ। Personality testing is of two types. First, a psychometric test. Psychometric test. Next was the projective test. Psychometric test heading there. The under ଲେଖ collection of case history report. It is a ready-made information. It is a ready-made information case history লেখা। It is a ready-made information about the person's life
whose personality we want to access. Access. Next point. These information are collected. These information are collected from their parents, comma family members, and relatives, comma teachers, friends, and form of other society and organization member who know them. Evaluation through rating scale. Evaluation through rating scale. The range of these rating scale. The range of these rating scales the range of these rating scales starts with 3 and continue till 13 or 20 on depending upon its necessity and usability. Next one, 5 to 7 point rating. 5 to 7 point rating. 5 to 7 point rating scales are used to measure various types of personality traits. Next one, different type of rating scale like relative rating scale, scales like relative rating scale and absolute rating scale, from which data collected that can be quantified.
that can be quantified. Or using questionnaire. क्वांटिटी माने डिफरेंट तादरे सब रेटिंग स्केल रही रेटिंग रो क्वांटिटी टा अधिक रही हम को वेरे रेटिंग दबा जेंति सी देला कोन वेरी सोसिएबल अनसोसिएबल तादरे गोटे लोकर क्वांटिटी वाइज ता बिहेवियर टा को हमें जज कर बुझी पर यूजिंग क्वेश्चनियर it consists of it consists of set of standard question in the form of general statement in the form of general statements the answers of which can be marked under three different categories like yes no and cannot say or doubtful. This can be used to collect the information about the attitude and temperament of a person. Towards many issues. So, like using self-report inventories. Using self-report inventories. It is the tax of the subject to give verbal responses or written responses or written responses about himself in a rating scale. Himself in a rating scale. Next, through behavioral and situation test. In this type of test, the subject is placed
in a typical situation, in typical situation, and the test instructor observe, and the test instructor observe and record the subject's reaction, and record the subject's reaction and responses to these situations, to these situations. Through personal and group interviews. Interview is a technique which is considered to be most powerful tool for assessment of personality. Considered to be the most powerful tool for assessment of personality. An interview session involves face-to-face communication between at least two persons. Face-to-face communication between at least two persons, interviewer and the interviewee. आ भितर जेकोसी तीनटा लिखियो, आदर तीनटा लिखियो, आरटार तीनटा लिखियो, पढ़े दियो। देखो projective technique, the term projection literally means throwing out. Projection is considered to be the one of the most common type of defense mechanism used by the person. As a technique of measuring personality, the term was used by Frank. This technique measures the source traits of personality. Hence, this test also called as the death method. The projection रे हमें direct defense mechanism को जीवा आधरे तंकर जो traits गुड़ा को ची source traits इधर display करिए. The technique had different form of psychometric tests in many aspects. In the first place, the approach to test the personality is different. Secondly, these tests are subjective. They cannot be evaluated or measured objectively. In third place, it's analysis and interpretation. देखो ये जो projection technique रही हो, approach to test personality, the approach to test the personality is different. माने जो टेस्ट आमे तंका ऊपर अप्लाई करिवा each and individual person करा टेस्ट टा different रहिबो. Secondly is the subjective, they cannot evaluate measurably objective. Subjective माने ता details overview आमे सब दवा बुझला आर किछि जिंस समान अछि जेमति कि आमे देखिबा using self report inventories जादरे कि आमे details सब लिखा जाय ये भी सेमति रहिबा आदरे सब details technique रहिबो. तापरे रहिबो थर्ड रे रहिबो it is a analysis and interpretation. तो गोटे पर्सन ऊपर हमें एनालिसिस करिवा आगु को कोन होबो ताको इंटरप्रिटेशन करिवा
अनुमान लगेबा जे तार ए गुण जो से एमती हो छुआ को आम कहू तो लाइफ रे या हो से एटा गोटे इंटरप्रिटेशन लगा जाए बट इट मे बी माने समान रही थाए बा सेटा लागि जाए तो मे नॉट बी लागि न बुझिला एटा इंटरप्रिटेशन को द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन मोड जोटा रहला Rorschach in blood test, RIT test, ଗୋଟେ TAT, thematic appreciation test, and Rosenwing picture frustration test, RPFT. The first test, ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ sentence completion test, draw a person test, DPT, word association test. The first test जोटा ରହିଲା RIT, the test of the personality is developed by Hermann Rorschach, a Swiss psychologist. The test is also popularly known as Rorschach ink blot test. The test consists of 10 standard symmetrical ink blots. এটা তোমার প্র্যাকটিক্যালি তোমার দিয়া যাবে বুঝছো যেটা প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে দিয়া দেলা প্র্যাকটিক্যাল এটা হচ্ছে সব হ্যাঁ আর প্র্যাকটিক্যাল আছে ହେଲା ତମକୁ ସବୁ ink blot ଦେବେ 5 of them are black and white while other 5 are same color. These blots are printed on the center or whiteboard about 7 inch to 10 inch size. The process of printing of blots are unique. They are made by dropping the ink first one's place and then folding the paper in just half size. After opening, it gives the impression of very ambiguous scenes. They appear to be more or less meaningless picture. This card used individually, one card at a time from 4 different angles. The subjects are simply asked what the picture are looking like. The responses of the subject are recorded, the interpretation and scoring made accordingly. It is expected that while responding to these ambiguous ink blots, the subject will be respond on the bias of their own past experience, present experience, thereby will definitely reveal the important dimension of the personality. अर्थ हूँ जितेबाला आम कमन गोटे रास्तार आसुचे धर वर्षा होगला तारे पानी फुल है रास्तार कौटी खाल अच्छे ढीप अच्छे आमको जना पड़े आम प्लेन ने आसू कि जो आम रेगुलाली से रास्तार आसुचे तो आम जानी कौ पटे नाड़ी अच्छी आम स्लो रे जावा कौ पटे खाल अच्छे आम स्लो रे से जगह कि जो न्यू लोक आसो से आसिक भितर पड़े बुझी हूँ मैंने यहाँ हूँ कौन माने से इंक बोर्ड लगे फोल्डिंग करदे फोल्डिंग कलापर जो शो करेंगे किसी जिन हूँ जोटा कि आम आगुरी एंटिसिपेशन कर कलर केमती बुझे आउ जन सब आनालाइज करेंगे बुझी हूँ तो यही सब इंटरप्रिटेशन थ्रू रे से तुमको रेटिंग देवे तुम गोटे प्रैक्टिकल हुए सब इंक बोर्ड तुमको देवे भितर तुमको सांगे सांगे गोटे सेकेंड देवे गोटे पर्टिकुलर टाइमिंग देवे से टाइमिंग भितर तुमको एनालिसिस करा पड़ो कलरटा कौन देखते आ तुमको कौन विजिबिलिटी रो तो से कलर को देखिए तुम रेटिंग दिया आ जी आकुरेट कहूबा मैक्सिमम करेक्ट रहिबो तार आईक्यूटा अधिक बोली कह आउ किसी जन अच्छा सी आगुरी एक्सपीरियंस करथिबे न देखि कहि हाँ यही भाया हो पार मुझे जानसी यहाँ फोल्डिंग कले आगुरी जो देखी फोल्डिंग करके मत थे देखा तो ये कलरटा या मे भी कलर चेंज हो पाए मोर फोल्डिंग तरीका जब अलग थी से कलर मे भी चेंज हो पाए मैंने इंक जो दिज्व लगे जीव कौन हम सुखी न स्प्रेड हो से जगह तुमको एनालिसिस कर बुझे तो से टेक्निक कर आरआईटी टेस्ट Rorschach test is widely used clinical and diagnostic purpose. This test has a standard scoring manual that help in psychologists to score different type of responses. This manual is based upon the careful research designed to determine reliability and validity. However, in the spite of precaution and administration of the test, the scoring and interpretation part may suffer from the several limitations. In spite of these tests can help us collecting useful clue about one's personality. ता भितर कौन हुए बेले बेले इटा डिपेंड करे का गोटे देखा जानु थियो हला माने आई साइड प्रॉब्लम थियो से अलगा सेंस दब किंतु जता पाखरु आसीबो से अलगा आंसर दब बुझी होची तो एटा सफर हुए किंतु एट द टाइम एटा कौन हुए ना एज अ एक्सपीरियंस हिसाब रे सेटा तुमको सेटा जजमेंट करा तापर होची thematic approach test but TAT test. This test was
devised by the Murray and Morgan in the year 1935. The test is more often used than a Rorschach test. The thematic refers to the theme and appreciation, means clear perception. Administration of the test is also quite easy and simple. The test is consist of set of 20 standard pictures and blank card. कोईटा picture नेबे और blank card नेबे. Each card represent different characters and situation. The subject is presented with the picture cards with the picture one at a time and is asked imagine a story that was our past. What is happening at the present and what will be the outcome of the story. Thus, it is assumed that while making a story, the subject might use the happening of his or her own life event unknowingly and thereby will indirectly reveal important aspect of their personality. ओके तो एठी कौन हम जो पिक्चराइजेशन देखा जीवो देखला परे से तुमको कहिबे जे आर पास्ट कौन अछि आ फ्यूचर कौन अछि तो सेठी हठात ऊपर जे तुमको लिखिबा को जीवो मे बी सेरा कौन करिबो तुम लेखाटा इट इज रिलेवेंट टू योर पर्सनालिटी तुम सहित कौन घटिछि से देखा जी पिला माने पाठ पढुते एग्जाम टाइम थी तो तुम से जो एक्सपीरियंस ता कौन करिवो तुमरा पास्ट आ जो फ्यूचर कौन हबो तुम लिखिबो तो किसी ना किसी पार्ट ता सेटा रिलेवेंट तुम सहित हेइते गोटे स्टोरी लिखा जो व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ अबाउट योर फैमिली मदर गोटे सिंबल थी पिक्चर थी माटी खाइबा को दउथबो वर्षा होतो तो ता ऊपर तुम स्टोरी लिख तमे तार पास्टा लिखिबो जे घर नाही ये नाही फ्यूचर रे कोन हबो इंदिरा आवास योजना करता घर मिलिबो बुझियो जी तो एई सब प्रकार एंटिसिपेशन हो पाइबो बुझियो रोजेनविंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट RPFT. The test of accessing personality was devised by the Rosenwing in the year of 1935. The test consists of 24 cartoons representing situation of everyday life. In each picture, the character is presented with saying something that has some frustrating significance to the other character. The subjects are instructed either to write down a story or tell verbally as to what is reply of the second person to that character. The responses are then recorded to the interpreted on the basis of reaction and expression of the subject. तो देखो पेपर रे बेले बेले कौन हुए कौन से गोटे सिचुएशन आसिले पॉलिटिकल हो किंबा गेम ऊपर हो से माने तार कार्टून बना जेतबे इंडिया कोन कला हमर इलाइट क्लब जो महाकाश अभियान स्थान पाई नथला से गोटे भितरे इंडिया कोन करथो से नॉक को डोर को नॉक करथबो आ भितरे सब बसिबे आ गोटे बुल गोटे रहिछ बुझे बुझे तो से पिक्चराइजेशन नो सी जेतबे इंडिया फेलियर हैला फर्स्ट में जो चंद्रयान 1 रे मतलब रॉकेट गला रॉकेट आ गला नहीं तो जो मिशन मंगल मूवी रे जोटे देखिदा ता भितरे गोटे कार्टून करके से देखैते फॉरेन न्यूज पेपर तो सही जगह रे जो सतीश धवन से कौन करते कहले से जो बुलटा जो बाहर अछि से बुलटा को केमती भीतर को नै तांका टारगेटटा से रहते तो जे बुझिवा लोक से कौन करते से कार्टून भीतर से बुझी के ता भीतर से इंस्पिरेशन नै तो एबला किछि किछि सिचुएशन जेतबे आसे ताको कार्टून माध्यम रे हमर न्यूज पेपर रे ताको रिप्रेजेंट कर बुझिला ता भीतर तुम कौन करिवो तार आउटकम ता तुम that is called as the RPFT technique sentence completion test. As the name indicates, the test consists of some incomplete sentence and the subject are required to complete the sentence of their own. The free association method is used to conduct the test. No restriction are imposed on the subject to complete the sentence in specific way. It is assumed that while completing the sentence, the subject will unintentionally and unknowingly reflect some personality traits. The information sentence could be like, my happiness is depend on मिठा खाइबारे भल पाए का बाड़े को भल लागे हला तो एटा होची आदरे मल्टीपल चॉइस किछि नथियो सेंटेंस टाइम में तरे कंप्लीट करिया माय हैप्पीनेस इज डिपेंड ऑन तो इट इज ओपन प्लेटफॉर्म समस्त हैप्पीनेस टा अलग अलग रहते के बुलिबा को भल पाए कि खाइबा को भल तो सेटा जतरा हमें कंप्लीटनेस लेखिबा सेटा गोटे पर्सनालिटी डिफाइन कर आई एम अफ्रेड ऑफ ठीक हम कुकुर को देखि भल डरे एवं अंधार को देखि डरे बुझिला माडो खाए को डरे ओके साप
तार सेटा अछि कुबे समस्त अलग अलग आफ्टर आई कैन नॉट टॉलरेट मते गाली देले मु कांदे आज मु लंका खाई टॉलरेट करि परिबे से जतले खाइबा ऊपर जीवो हम जानिबा फुडी ଯେତେବେଳେ କହିବ ନାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଟଲରେଟ୍ when anyone scolding me ତ ଏଇଟା ତାର ବିହେଭିୟରାଲ ତାର ଇମୋସନ ଉପରେ ସେଟା ଲେଖେଇବ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଏଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ପଢିବା ପାଇଁ କିଏ ଲେଖିବ କି କହିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଫିୟର ଇଜ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ ରହିବ ଏଇଟା ଓପନ ଅପ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ ଦିସ୍ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଓପନ ଅପ୍ ରହିଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର ୱେ ଇଟ୍ ମେ ବି ଏ ଫୁଡ ମେ ବି ସିଚୁଏସନ ମେ ବି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ହଉଛି draw a percentage dpt the administration of this test is quite easy and simple the subjects are presented with a blank sheet of the paper pencil and eraser and then they are asked to draw the picture of any person when the subject draw the picture then he and she told to draw another picture or figure of the opposite sex at the end they are required to imagine a story about the person and if they are character of any drama or novel. This test was devised by the Macover to test the personality while analyzing and interpreting the drawing. She preferred to use psychodynamic approach, the way the picture are drawn, the parts that are missing, the portion of different part of the structure of the person gives us some impression of personality and dimension. Freud was of the view that was we project our inner conflicts. देखो ये जो पिक्चर ड्रॉ करने को दिया था जंतु की कोई स्टोरी अच्छी गोटे राजा कौन करे गोटे ड्राइंग कंपटीशन करे ड्राइंग कंपटीशन कर कहले सब चित्रकर मान को डकेले डकेला पर कहले जे सबुठारो शांत पिक्चर तमे सब बनेइबो माने पूरा ता भितरे सब पीस सब रहिबो ता भितरे किछि डिस्टरबेंस रहिबो तो समस्त बनले कि पूरा माने राति रे पूरा फोटो उठेले माने पिक्चर बनेले जेंति कि सूर्य जो चंद्र रहिबो पछ पछ सब थिबो राति रे समस्त पूरा निर्जन हे सोई जाइथिबे से सब बनेले कि गोटे नई बहि जाउथबो पहाड़ थिबो तो से सब बनेले एम सब डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर सब बना ता भितर गोटे जो ड्राइंग थिला ता भितरे थिला बहुत जोरे झड़ तोफान होउची गछ फछ सब भांगी जाइची हाँ गोटे डाल रे गोटे चढ़ेईटे बसीची अत छुआ को खाइबा तो रिजल्ट डिक्लेरेशन जेतेबेले हैला तो सब पिक्चर को एनालाइज करा गला बहुत बहुत शांत सब पिक्चर थिले ये गौतम बुद्ध बुद्धकर पिक्चर कले पूरा शांत है बसिक तपस्या करूछन किंतु ता भितर सबुठारु बेस्ट पिक्चर है से जो चढ़ई खाइबा को दउछ तो समस्त आश्चर्य होला पचारले राजा को एती तो सब किछि जिंस तो शांत नै सब जगह बाहर एते झड़ तोफान होची गछ भांगी जाइछि त एटा बेस्ट पिक्चर केमति होला ना बेस्ट पिक्चर एमती है ते सारा सराउंडिंग रे कोन होची माँ को थिरा फरक पड़नी माँ ता छुआ को खाइबा को से दउ तो दैट इज ए अवार्ड पीसफुल पिक्चर तो ताको से अवार्ड तो से देखो समस्त मेंटालिटी अलग थिला कि पूरा शांत परिवेश कला किए ये जो झड़ बात्या होता ता भितर माटी दउतला छुआटी खाया पे दउतला ताको किछि इफेक्ट करनी बाहर कोन बुझिलो तो से पिक्चर को अवार्ड तादरे कोन होला ना से पर्सन ना साइकोलॉजी टाको डिफाइन करा बुझिले तो सेमती आदरे कोन होबो गोटे पर्सन ना पिक्चर करिया दिया जीवो तापर अपोजिट सेक्स पिक्चर ताको बनाइबो दिया जीवो ता भितर ताको को रिलेशन नै कि गोटे स्टोरी तमे बनेबो तो ता भितर तम पर्सनालिटी जजमेंट हो नेक्स्ट होची word association test. This test was originally devised by the Francis Galton and later on it is used by the Wound and Cattle for assessment of personality. Administration of this test is very easy and simple. A list of containing 50 to 100 words is taken for the test. Only one word is verbally spoken to the subject at a time, and the subject is required to respond the word as quickly as possible with the first word that comes to his or her mind. Normally, the list developed by the Jung and Kent Razanov is used of this purpose. Out of the total word, 80% of the neutral word and factual words.
20% of the words are emotional words that are scattered randomly in the list. The responses of the subject along with the time taken subject to respond all are recorded in the sheet. At the end, the words are taking more time to respond are identified to find out the reason behind the same. As these word are called complex indicator of one personality. These are also called as the critical word. Then the subject once again asks why and she took more time to respond this word. Free association method is used to collect the information from the subject. Then these responses are analyzed and interpreted to find out the such blocking are their personality of the subject. What is widely used for the test personality and the test is used for the different purpose like for clinical diagnostic purpose, for detection of guilty, for identifying complex area of personality, disturbances in the personality, to know the real attitude and internal pattern of the subject. तो ये कौन कले ना 50 ରୁ 100 वर्ड्स नेले 80 वर्ड्स एमती से चूज कले जा भीतर 60 वर्ड हमर कॉमन रहइबो 20 वर्ड इमोशनल रहइबो आ आमे से वर्ड टाको समापाव बहुत लेसली आमे यूज करू जेमती यही सब साइंटिस्ट माने करना वुंड गाल्टन तो ये सब वर्ड गुटा आमे एबे न्यूली सुनु गौतम बुद्ध अशोका ये सब जिनस आमे सब जानि छी बे अशोका कहले तमे चाहेले किछ ना किछ वर्ड तमे लिखि परिबो वुंड आ गाल्टन विषय आमे एते जानि वार्डिंग पास्ट एक्सपीरियंस से कौन करते हैं विषय लिखा हमको टाइम टेकन लगे तो ये जो जिनस जो वार्डिंग गुड़ा कहे किसी वर्ड गुड़ाक से रैंडमली चूज कर से वर्ड भीतर किसी हैप्पीनेस थो किसी सैडनेस थो किए सैडनेस चूज कर किए हैप्पीनेस चूज कर भीतर किए गोटे कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखे तो ये जो वर्ड चूजिंग रे पचरा जीव जे कहीं तुम से वर्ड चूज तो सेठो से पर्सनालिटी डिफाइन है तो यहाँ जो प्रोजेक्शन असेसमेंट थिला आ ऊपर हमें तीनटा लिखियो सब डाकी दउछ आ तीनटा तुम लिखियो आउ गुडा जो रहिला ए 2 मार्क्स से क्वेश्चन आसी ठीक है एटा एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन देछि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टिव टेक्निक एटा गोटे इटसेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन so what do you mean by projective techniques हेलो नमस्कार आज्ञा नहीं तार नहीं तार आईटी अच्छी आईटी अच्छी और मैथ अच्छी 10:30 11:30 12 10:30 क्लास मतलब 10:30 क्लास 10:30 आसो 10:30 गोटे जाए क्लास कौन कौन से कहीं ना जब मैथ क्लास अच्छे तो बुझी पारी हम्म मैथ क्लास जहाँ तक आसे से आसले मत कॉल कर देख क्वेश्चन लिखी ना व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टिव टेक्निक डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोटे ऐड कर नहीं लिखी दे मैं ब्रीफली डिस्कस एनी थ्री
projective technique of accessing personality. तो सॉरी होनी आगो को इटा पढ़े की सार दूजे क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास रे डाकी दी सर जीवो इटा अच्छा पर्सनालिटी टेस्टिंग इन इंडिया the field of personality testing has been expanded remarkable apart from the psychometric and projective test mentioned earlier. Some of the other tests are also in practice in India. These include some of the behavioral observation along with the biological measures of a personality. Tar behavior kemti rahiba, biological measures kemti. There has been tradition in the India to use foreign tools for variety of purpose starting from academic, business or other field of interest. माने तार एकेडमिक रे तार कोन इंटरेस्ट अछि बिजनेस रे कोन इंटरेस्ट अछि ताको नै कि तार साइकोलॉजी डिफाइन करे. This is no expectation to adoption of personality tests from the foreign country and to see its effect in India, but not all the tests are suitable for Indian context due to the strong cultural variation. The foreign ने जो टेक्निक यूज करा जाउछे इंडिया रा टेक्निक सब अलग है because of our cultural issue and way of living. I mean in the living करछे हमरा living style टा अलग रहे. Since but not at all the tests are suitable for the Indian context due to the strong cultural variation and that of some other factor which affects the interpretation part of test. Since last 1.5 decade, Indian psychologists have shown considerably interest not only in the adoption of some foreign tests but also developing more tests to access personality more accurately. The India जो culture हिसाब रे हमर testing सब अलग थिला सेति पई कोन हला ना आमर टेस्टिंग अलग रहला किंतु एबे कोन होइला ना किछि सब हमर इंडियन साइकोलॉजिस्ट माने अधिक ब्रॉड करिया पई पर्सनालिटी को फॉरेन टेस्ट को भी से माने इंप्लीमेंट कर मल्टी वेरिएबल पर्सनालिटी इन्वेंटरी एमपीआई त्रिपाठी पर्सनल प्रेफरेंसेस शेड्यूल टीपीपीएस जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी डिफेंस प्रोनाउंसेस स्केल MPI dependence pronunciation scale. MPI is used for testing the adults. The inventory was developed by the BC Muthaya. The test consists of 50 items and it is designed to access personality traits like achievement, needs, intervention, neuroticism, self-confidence, and other dominant traits. The subject are required to answer the test item by making yes and बुझला खाली ना चेंज हला क्वेश्चनियर जेमति थिला ये सेमति क्वेश्चनियर रे एस एंड नो करी के तार सब क्वेश्चन सब रिपोर्ट करी दे कोड इंट्रोवर्सन माने कोन इंट्रोवर्सन माने कोन हां हां कोन ना कोन इंट्रोवर्ट करिया माने कोन हां नेगोशिएशन करिया कोन को को তুমি কোন যেতলে তুমি কথা হউতুও তুমি ক্লাস নউতি से समय जने आसीबो तुम माने कहियो किछ कहियो चाहतो बुझा सेटा कोन आसीबो मु इंटरवेट कली सॉरी टू इंटरवेट बुझी पाउछ तो इंटरवेशन एंड एक्सट्रावर्सन इंटरवेशन माने आमे कोन करिवा धर मु कथावार्ता करथिबी मु चाहिबी जे मते सब बेले प्रायोरिटी दिया हां हां माने मु अधिक जेंति गोटे पिला थांदी इन एजुकेशन एकेडमिक भलो नथिबे किंतु फटफट होते
ଖାଲି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିସ୍କସନ ଏ ସବୁ ଆଟେନସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ହଉଛି ତ ସେଇ ତାକୁ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଟିଜିମ୍। ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଟିଜିମ୍ କଣ ସବୁ? ହଁ ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍ ସରି, ଇଣ୍ଟରଭେସନ ଆଉ ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍ ମତେ ବି ଦେଖା ଯାଉନି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍ କଣ ସବୁ? ମାନେ ମୁଁ ଧର ତମେ ଜଣକୁ ମାନେ ମୋରାଲି ତାକୁ ବା ଇମୋସନାଲି ତାକୁ ତମ ଆଡକୁ ଖିଚିବ। ଇମୋସନାଲି ଖିଚିବା ପାଇଁ ତାର ସବୁ ତମ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁ କହିବ, ସିମ୍ପାଥି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ମାନେ ଇଆଡୁ ସେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଘର ପଳେଇଛି, ବାବା ବାଡଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଇମୋସନାଲି ତାକୁ ଆଟାଚ କରିବ। ତ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍। ତ ଦିଟା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସନ, ଜୋରସେ ଜୋରସେ ପଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍ ରେ କଣ ଆସିବ ନା ଇମୋସନାଲି କଥା କହିଦେବ ସେଟା। ହଁ ଭୂମି ଉଠେଇବା ନା ସିଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସନ ରେ ଯିବ, ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍ ରେ ଯିବ, ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍ ରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ରହିଲା TPPS is developed by the R.R. Tripathi. This schedule in the form of the multi-trait scale consisting of 15 personality variables. The variable include aggression, autonomy, affiliation, achievement, embarrassment, dominance, uh, nutrients, endurance, change, order of exhibition, interpretation, interception, difference, uh, Suckover, heterosexuality, all total these 225 item in the test. The subject are required to record the responses in the specific response set provided by the them. ତା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଲା ମାନେ ଆଗ୍ରେସନ କେମିତି ଆସିବ, ଅଟୋନୋମି କେମିତି ଆସିବ, ଅଟୋନୋମି ମାନେ କଣ କୁହ? ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫ୍ରିଡମ। ଆମେ କଣ ଫ୍ରିଡମ ସବୁ ଚାହୁଛୁ? ମତେ ସାର୍ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମତେ 8ଟା 8:30 ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଲିକି 11ଟା। ଫ୍ରିଡମ, freedom of thinking, freedom to living, freedom to do anything. Okay, that is autonomy. ସେ ତମେ କୋଉ ଆଦରେ ଅଟୋନୋମି ଚାହୁଁଛ? ଆଫିଲିଏସନ, ଆଫିଲିଏସନ କଣ ଆସିବ? affiliated means that is ହଁ affiliated ମାନେ ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ affiliated। ବୁଝି ହଉଛି ତ ତମେ କୋଉ ପରମିଶନ, ତମ ପାଖରେ କଣ କଣ ପରମିଶନ ଅଛି, ତମେ କୋଉ କୋଉ ପରମିଶନ ତମେ କାମ କରିବ, ଆଫିଲିଏସନ କହିବ। ତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ ରହିବ? ଆମ୍ବାସମେଣ୍ଟ କୁହ। ଆମ୍ବାସେଡର ନା ଆମ୍ବାସମେଣ୍ଟ? ଆମ୍ବାସମେଣ୍ଟ ତ ଆମ୍ବେସ ସରି ଆମ୍ବାସମେଣ୍ଟ, ଆବାସମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାର କିଛି ରେସପେକ୍ଟ ସେ ଡିଜର୍ଭ କରୁନଥିବ, ଡିଜର୍ଭ ନୋ ରେସପେକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉନଥିବ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା କୁହାଯାଏ ଆମ୍ବାସମେଣ୍ଟ। ତ ଆମ୍ବାସମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ୱେଟର କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ତ ଆମେ କୋଉ ୱେରେ ଡାକୁଛେ, ତାର ପର୍ସନାଲିଟି କଣ ହଉଛି, ତାକୁ ଆମ୍ବାସମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ହେଲା। ସରି ଆବାସମେଣ୍ଟ, ଡୋମିନେନ୍ସ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାନ୍ସ, ଏଡୁରାନ୍ସ। ଓକେ, ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ନ ଆସୁଛି କୁହ? ଏଡୁରାନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫ ଥିବ,
स्ट्रेसफुल लाइफ रे तमे ताको केते सर्वाइव करिवो को वे रे प्रेशर को तमे केमते हैंडल करिवो ओके चेंज ऑर्डर एग्जीबिशन इंटरसेप्शन डिफरेंस सकोवर हेट्रोसेक्सुअलिटी ये सब पार्ट को लेके से मैंने वेरीफाई कर तापर होची जेएमपीआई इज डेवलप्ड बाय मलिक एंड जोशी व्हिच इज मोर लेसर सिमिलर टू द एमएमपीआई टेस्ट इट इज आल्सो अनदर इंडियन वर्जन ऑफ टेस्ट इट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव माने यस एंड नो कैनर से इवा रही क्वेश्चन ईयर रही the DPS is developed by the professor JPB Sinha test 50 item the responses of the subject are measured 5 point rating quite true not at all undecided in the middle तो ए सब को नेके डीपीएस सिस्टम ता डेवलप बुझिला तो एटा थिला हमर ए चैप्टर द समरी और दीटा क्वेश्चन अछि ता रखले कंप्लीट